Hello, my name is Kumar Ravi, and today we are going to learn more about a very interesting topic called computer vision. आपने अपने आसपास कंप्यूटर विजन के कई सारे इम्प्लीमेंटेशन देखे होंगे, नहीं तो कम से कम महसूस किए होंगे, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, ट्रैफिक कैमरास, क्रिकेट का थर्ड एम्पायर. The smartphone in your hand is one of the biggest example of computer vision at work, right at your hands. कुछ स्मार्टफोन से जैसे आप जब तस्वीरें लेते हैं तो वो स्मार्टफोन उस तस्वीरों की लाइटिंग, उसकी स्टेबिलिटी, उसका और अच्छे से एनहांस्ड वर्जन आपके सामने कई बार लेकर आता है. इन सब चीज़ों को करने के लिए स्मार्टफोन कंप्यूटर विजन की एल्गोरिदम्स और उनकी टेक्निक्स को यूज़ करता है. तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से समझें in our next slide. So as you all know, this is an introductory video lesson, and in this I'm going to tell you more about what and why first, followed by how and where about computer vision. पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर विजन क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर विजन काम कैसे करता है, इससे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है एंड इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है. As a whole, we'll be able to understand this topic more conceptually, and also we'll be also knowing in the end about how to get into these fields and how to contribute more into it in terms of applications, in terms of making something really cool, and in terms of research, because as you know, this field is not that researched. So let's begin our journey by understanding what is computer vision. What is computer vision? कंप्यूटर विजन क्या है? कंप्यूटर विजन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए हम इमेज या वीडियो को पहले एक्वायर करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. हम इस इमेज को समझने की कोशिश करते हैं. ये सारा कुछ कंप्यूटर द्वारा कुछ कंप्यूटेशनल मॉडल्स का यूज़ करते हुए किया जाता है. अभी जैसे आप अपनी स्क्रीन में तस्वीरों पे देख सकते हैं, कुछ कंप्यूटर विजन के यूज़ केसेस हैं. नीचे की यूज़ केस में एक कैमरा है जो कि ट्रैफिक में लगा हुआ है और वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हर लेन में कितने कार्स हैं. सिमिलरली कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो पार्क में मौजूद लोगों को, ह्यूमन फिगर्स को पहचान सकते हैं और पहचानने के बाद बहुत सारे यूज़ केसेस बन के आते हैं. जैसे अभी के ज़माने में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है कि नहीं, इस तरह के कुछ यूज़ केसेस आराम से इस सिस्टम द्वारा बनाए जा सकते हैं. सो इसका एक मेडिकल यूज़, एक सिंपल मेडिकल यूज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. ऊपर वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं एक जेस्चर कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पे इंसानों के हाथ और उसके एक्शंस के ऊपर कंप्यूटर कोई काम कर सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक उंगली निकालूं तो कंप्यूटर कैन राइट 1 ऑन द स्क्रीन, या कंप्यूटर कैन प्ले अ सॉन्ग, कंप्यूटर कैन स्टॉप अ सॉन्ग. सो टिपिकली कंप्यूटर विजन के काफ़ी सारे यूजेस हैं और कंप्यूटर विजन को समझने के लिए हम अगले स्लाइड्स पे बढ़ते हैं. आइए अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर विजन की हिस्ट्री के बारे में. आजकल हम लोग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, ऐसी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं हमारे आसपास. और इसकी कुछ वजहें हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्यूटर विजन की जो फील्ड है
वो नहीं है। कंप्यूटर विजन की हिस्ट्री 60 साल पुरानी है, एंड आई मस्ट से इट्स रियली फैसिनेटिंग। आज के ज़माने में कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन फील्ड्स को इतनी इतनी एक्सेलरेशन इसीलिए मिल रही है क्योंकि आज के ज़माने में हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई है, काफ़ी एडवांसमेंट्स आई है। आप लोगों को पता ही होगा, एनवीडिया एक ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चरर है, चिपसेट मैन्युफैक्चरर है। ये एनवीडिया की जो ग्राफिक्स कार्ड है और इस तरह के जो भी हार्डवेयर एडवांसमेंट्स हैं, इनकी वजह से कंप्यूटेशनल मॉडल्स और इफ़ेक्टिवली और स्पीड के साथ चल पा रहे हैं। पहले जो डेटा दिनों में प्रोसेस होता था, आज मिनटों में हो पा रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन जैसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पुश मिला है। एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आया था कंप्यूटर विजन के लिए इन 2012 where AlexNet won an ImageNet competition. AlexNet क्या है, ImageNet क्या है, ये आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजीज़ ने कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली थी और AlexNet के ImageNet जीतने के बाद एक ब्रेक थ्रू मोमेंट मिला था इस टेक्नोलॉजी को। आइए हम थोड़ी और डिटेल में थोड़े और पीछे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है आज से 60 साल पहले की, करीब 60 साल पहले की। कंप्यूटर के पास इमेज को एक्वायर करने का कोई तरीका नहीं था। जो 1957 में, in 1957, there was an invention of the first digital image scanner, and it was known as one of the earliest breakthroughs in the computer vision, because now computers were able to actually see the image. One of the first digitally scanned photo was an image of Russell's infant son. जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, he was the son of the inventor of digital image scanner. वो स्कैनर बहुत ही प्रिमिटिव था क्योंकि ये 1960 के आसपास की बात है, एंड इट कैप्चर्ड a very grainy, not that clear image of 5 centimeter by 5 centimeter in a 176 into 176 array. बट ये इतना फेमस हो गया बिकॉज ये पहला इमेज था जो कि कंप्यूटर द्वारा कैप्चर किया गया था, that it is now stored in a museum called Portland Art Museum. So the invention of the first digital image scanner is considered as the starting point or the pioneer in understanding computer vision and actually able to get an image to a computer to be able to process, analyze and understand it. 2 साल बाद in 1959, two scientists named David Hubble and Thorsten Wiesel used electrodes to read the minds of 24 cats under the influence of anesthesia, while various photos were being shown to the cats using slides. So as you can see, यहाँ पे जो बिल्ली का दिमाग है उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और ये देखने की कोशिश की गई कि जब स्लाइड शो के थ्रू डिफरेंट फोटोज बिल्ली को दिखाए जाते हैं तो इस दिमाग में न्यूरॉन्स पे क्या असर पड़ता है और क्या सिग्नल्स मिलती है। जो उन लोगों ने नोटिस किया कि बिल्ली के ब्रेन के न्यूरॉन्स फायर्ड अप हो जाते हैं, मतलब दे स्टार्ट प्रोसेसिंग समथिंग, दे स्टार्ट emitting signals when the image का स्लाइड का बॉर्डर इस ये वाला एजेस, जब एक इमेज से दूसरे इमेज पे हम शिफ्ट करते हैं तो जो एज बीच में आता है दो इमेज के बीच का,
उस इमेज के उस एज के आने पे बिल्ली के दिमाग की न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एमिट करते हैं। उसके बाद बिल्ली इमेज को देखती है और उसके हिसाब से दिमाग शांत रहता है या हाइपर हो जाता है बेस्ड ऑन इमेज कौन सा है। इस चीज़ को देखते हुए रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि हमारे दिमाग में एनिमल्स के विजुअल सिस्टम में एक प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है जिसके अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स होते हैं। जो सिंपल न्यूरॉन्स होते हैं वो एक क्विक डिटेक्शन करता है। जैसे हम किसी दूर से आते हुए इंसान को देखते हैं तो हम सबसे पहले ये जज करते हैं कि वो एक इंसान है क्योंकि उसकी आकृति इंसान वाली होती है। जैसे ही वो करीब आता है we look at the color, we look at the image, the shape of his face, we look at the shape of the nose, थोड़े और डिटेल में जाते हैं और फिर हम उस इंसान को पहचान पाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने पे साइंटिस्ट को ये पता चला कि एज डिटेक्शन जैसी कुछ एल्गोरिदम्स जो कि हमारे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के सिंपल न्यूरॉन्स की तरह एक्ट करते हुए हमारे को ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होने के बाद हम उसको कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स में ले जा सकते हैं थ्रू अ डीप लर्निंग सिस्टम एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इमेज ऑफ द वीडियो बीइंग प्रोसेस्ड। ये पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैंने छोटा सा इसका उदाहरण दिया है, एक्सेप्ट लिखा है। इस पेपर को पूरा पढ़ना हो तो ये QR कोड अपने फ़ोन से आप स्कैन कर सकते हैं। ये पेपर पब्लिश्ड है बाय द साइंटिस्ट्स। As we all know now that the history of computer vision is quite old, over 60 years for that matter. So computer vision has always been a subject of interest, research and publications. Several things came by and some of the notable events were the following. So in 1982, David Marr, a British neuroscientist, published another paper which was basically built on the idea of Hubble and Wiesel, the scientists who performed the cat experiment. Now David Marr gave us another important insight. He established that the vision is hierarchical. The vision system's main function, he said, is to create 3D representation of the environment so that we humans or animals or any other people with the vision system, any other living thing with vision system can interact with it. So he introduced a framework for vision where low level algorithms that detect edges, curves, corner, etc. are used as stepping stones towards a high level understanding of visual data. In 1997, a Berkeley professor named Jitendra Malik released a paper in which he describes his attempts to tackle perceptual grouping. Now, what's this perceptual grouping? Perceptual grouping is where machines try and carve out the image into sensible parts and tries to determine automatically which pixel on an image belong together and distinguish the main object from the environment and from its surroundings. They used an algorithm called graph theory algorithm. I would suggest you go online and look for this to understand more about this algorithm. Soon after that, in 2001, the first face detection framework that worked in real time and was also used commercially in the coming times was introduced by Paul Weiler and Michael Jones.
Uh, as you all know, in 2012, the major breakthrough happened with the advancement in hardware technologies, the graphic cards, chipsets, better CPUs, more cheaper RAMs, space, hard disk space, everything. So the entire hardware uh, ecosystem got cheaper and better. With that, in 2012, a very great thing happened. As you all know, LXNet uh, achieved an error rate of 15.6, which was really path-breaking for the history and for the upcoming advancements of um, computer vision. So let us understand how computer vision works. Uh, Computer vision is broadly classified into three major parts. Um, the first thing is we acquire an image for processing. So, so images which can be videos, photos, or even live stream of events like traffic cameras, national parks, football games, cricket games. Such images are first of all acquired using cameras or specialized instruments like 3D technologies or infrared sensors or similar technologies. So such images and visual data is first acquired. The next step is the processing of the image. When the image is acquired, the deep learning modules are mainly responsible for processing the image. Uh, Basically, deep learning modules are pre-trained on several labeled data sets. What do we mean by labeled data sets? We feed the neural network in deep learning by a set of images saying that ये वाली image is a cat, this image is a dog. So this by using such trained and labeled data set, our deep learning modules are trained. So once they are trained, the images which we have acquired right now will be processed using these modules. Once the processing is done, the understanding part of the image, the third part, which is understanding the image or giving an output, is left. So in this final step, the object is finally identified and classified. What do we mean by classification? It means that we assign a value to it. For example, if we have fed while acquiring an image of a dog, uh, processing it and understanding it based on the learned data set, and finally giving an output which says that this photo is a dog. So application of computer visions are, as I told you, OCR. There are many printed documents or books. For example, printed books or old books when there was no computer to be printed and there was no computer where it can be typed and digitally stored. OCR comes in very handy. You scan the book and the book is now stored on the computer और फिर वो searchable हो जाता है. People can look into what content of their book is, search it, and it becomes widely available. और ज़्यादा लोगों के लिए वो यूजेबल होना शुरू हो जाता है, ट्रांसलेशंस आसान हो जाती हैं. सो OCR हैज़ बिकम अ वेरी पावरफुल टूल टू डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज इन द करंट टाइम्स. फिर आपने जब भी कभी रोड पे, फॉर एग्जांपल टोल प्लाजास, आप अभी कभी रोड पे अगर जाते होंगे तो टोल प्लाजा पे आपको स्लिप मिलती है. आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो स्लिप पे आपकी कार के नंबर या बाइक का नंबर भी लिखा होता है. हाउ डू दे डू दैट? तो वहाँ पे एक कैमरा लगा देते हैं, उस कैमरे से आपके नंबर प्लेट की तस्वीर ली जाती है एंड यूजिंग द मशीन लर्निंग algorithms, a simple machine learning algorithm, the digit recognizer basically, the digits are recognized, the characters are recognized और फिर आपके गाड़ी का नंबर टोल प्लाजा के कंप्यूटर पे आ जाता है जो कि वो आपको प्रिंट करके रिसीट में देते हैं. सो these are very interesting and practical applications of computer vision. एक फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन भी है कंप्यूटर विजन का. इसको फ्यूचरिस्टिक बोलना सही नहीं रहेगा बिकॉज अमेरिका में, यूरोप में के कुछ शहरों में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर ऑलरेडी देयर.
They're just waiting for some compliance clearances to become commercially available. Uber, for example, is using self-driving cars. Now self-driving cars के चारों तरफ सेंसर्स लगे होते हैं. कुछ सेंसर्स जो विजिबल स्पेक्ट्रम को पकड़ते हैं, कुछ सेंसर्स जो साउंड बेस्ड होते हैं, कुछ सेंसर्स जो रडार रडार टेक्नोलॉजीज पे बने हैं. So, based on all those sensors input, computer vision, other AI algorithms, a self-driving car is able to drive on the roads and take decisions on when to turn, when not to turn, based on whatever the inputs, the real-time inputs the road is giving to it, taken from the sensors of the self-driving car. These are very practical examples of computer vision. Let's see a few, fun examples or something which you all might have seen uh, in your life or अब तक. क्रिकेट तो आप लोग देखते होंगे. क्रिकेट में जब अंपायर से डिसीजन नहीं हो पाता या अंपायर को लगता है कि उसने ठीक से नहीं देखा, तो वो थर्ड अंपायर को रेफर करता है. जब वो थर्ड अंपायर को रेफर कर रहा होता है, तो थर्ड अंपायर का मतलब होता है हॉकाई. और ऑब्वियसली एक व्यक्ति भी बैठा होता है डिसीजन लेने के लिए, बट उसको असिस्ट करने के लिए हॉकाई नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पूरी तरह से कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट है एंड टू अंडरस्टैंड कि बॉल ने कहाँ पिच टप्पा खाया, बॉल विकेट में लगता कि नहीं लगता, बेस्ड ऑन tracking the ball, its motion, its velocity, its height, everything. So you can see the pitching is good because computer vision के द्वारा इस चीज़ को identify कर लिया गया था पहले ही मैच के. Impact is in line, wickets hitting. So all these things are basically derived using certain computer vision programs, which are all interlinked in the Hawkeye system by ESPN Star Sports and other companies like similar companies. Other very interesting examples are Instagram and Snapchat filters, which you guys might be using a lot. You create dog face, you create you wear spectacles on your face. There are several other elements also. So how this people achieve these things? They basically using computer vision identify your face, they identify the location of your eyes, they stretch it, put some overlays of already drawn spectacles. Basically all these things are not that difficult to achieve, but very interesting. If it not if you want to achieve these kind of filters, these kind of systems and software, you want to build them, it is very easy to achieve. You just need to concentrate on a few languages, frameworks, understand maths behind it. Let's go and check out which languages and frameworks we all should learn to get into the field of computer vision as well as AI in totality. So as you all know, Python has been a language of long years. It has seen long years. It's one of the oldest languages as well. And recently Python has been gaining a lot of traction and a lot of importance because आजकल की जितनी भी डीप लर्निंग और AI और कंप्यूटर विजन बेस्ड सिस्टम्स बन रहे हैं, majority of them are based on Python. Why people have selected Python? Because it was easy to prototype, and if you try learning Python, इसका learning curve भी बहुत ही कम है. इसका मतलब ये कि आप इसको थोड़ी सी मेहनत के साथ ही सीख सकते हैं. इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आपके लॉजिक्स ठीक हैं, आप अगर थोड़ा प्रोग्रामिंग कर पाते हैं, तो Python is not a difficult language to learn. So Python एक लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया जिसके अंदर आप कोड्स लिखते हैं और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. देन देयर इज़ अ फ्रेमवर्क कॉल्ड टेंसरफ्लो. ये फ्रेमवर्क जो टेंसरफ्लो का है, ये गूगल द्वारा बनाया हुआ है. नाउ this TensorFlow framework is again based on Python. So if you want to write something in TensorFlow, Python is
what you will use as a language. There are other versions of TensorFlow as well, where you use JavaScript, where you use other languages, to integrate your codes with the deep learning models you will be making. But typically, TensorFlow goes with Python. Now, what is TensorFlow? TensorFlow is basically used to do all those deep learning based activities which requires a lot of effort and a lot of time when you try to develop it in directly in Python or directly without using any framework like TensorFlow. So TensorFlow is an abstraction of various functionalities of deep learning, various loss functions, various models are already built in. So basically, if you use TensorFlow, you can reduce your time and effort on making deep learning models and get results faster, because most of the things are built in that. Uh, Again, it's built by Google, and it has been one of the number one choices for many deep learning experts. Other alternatives for TensorFlow are PyTorch, uh, some other frameworks of some other languages, but TensorFlow remains again at the top of that spectrum. Um, OpenCV. So OpenCV is unlike TensorFlow. TensorFlow is basically used for learning AI, um, and computer vision also becomes a part of it. But OpenCV is completely dedicated to computer vision. As you can see, the name itself, OpenCV, Open Computer Vision. So OpenCV basically allows you to capture image easily, acquire image easily, process it in using some ready-made algorithms, process it, uh, uh, image को छोटा करना, बड़ा करना, transform करना, creating a matrix out of an image, matrix multiplication, dot product. So all these, identifying a face of a person, all these things are abstractly built into OpenCV and are pre-made for you to use. So if you use Python, TensorFlow, and OpenCV together, learning and executing computer vision systems is not a difficult task. It will be very easy on you, and you can get a quick start very easily. So now let's understand what are the career options when you when you try to learn, and when you want to become a computer vision expert. What are the career options open for you? Uh, Career options are much more. What I have tried to show here is mainly the three broad segments of uh, career available for computer vision experts. Um, so, see, a computer vision engineer. There are many companies, especially the startups now, and even the companies MNCs. There are many companies which are looking for computer vision engineers. Why? Because as you might have seen on your phone itself, when you try to take a photograph, अगर photograph लेना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं. पोर्ट्रेट मोड होता है, जिसमें कंप्यूटर विजन के थ्रू आपके फेस को हाईलाइट किया जाता है, बैकग्राउंड को ब्लर किया जाता है. तो इस तरह के सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के लिए कंपनीज कंप्यूटर विजन इंजीनियर की खोज करती है. तो कंप्यूटर विजन के कोर्सेज करके या कंप्यूटर विजन के बारे में और अच्छे से डीप में जान करके आप कंप्यूटर विजन इंजीनियर की तरफ भी बढ़ सकते हैं. Computer vision researcher, the second option in a computer vision career, is computer vision researcher. So many computer vision again is not a field which has seen its peak. The people are still learning. चीज़ें अभी भी कंटिन्यू हो रही है, लोग समझ रहे हैं और चीज़ों को और अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कंप्यूटर विजन में, और एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. उस केसेस में कंपनीज को रिसर्चर की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो अभी तक बनी नहीं है, और कंपनी चाहती है कि मैं उस फील्ड की पायनियर बनूं या पहला फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज लूं, तो दे हायर रिसर्चर्स एंड ट्राई टू
capture that particular thing which has not been yet done. तो researchers का work होता है किसी चीज़ को, नई चीज़ को खोजना या नई चीज़ों पर research करना और उसको market में लेकर आना। और रिसर्चर्स का ये भी काम होता है कि अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो उसको और अच्छे से अच्छा बना के डिलीवर मार्केट में कैसे कर सकते हैं। तो computer vision engineer, computer vision researcher, these are the job profiles which are available in the market. Another job profile which is a very traditional one is into academia. Uh, Becoming a professor, taking a PhD degree, doing research into computer vision, taking a PhD degree, getting into more into teaching side and becoming a professor and spreading your knowledge to others. I guess I have been able to uh, tell you about computer vision uh, in a nutshell. Uh, as I understand, this was a very introductory session, and it would be uh, wrong to say that I have given you the entire knowledge of computer vision. Computer vision is a very very vast field, and I hope this introductory session has ignited that spark in you where you can go and understand, go online, read more about it, get into this field, and make this world a better place to live. Thank you.